So, a very good evening to all of you, and welcome to your own book reading session, The Magic. So, so yesterday we read about the introduction, and I asked to share some learnings from the session yesterday, but I got only two. I'm saying that because when you write, you think of the session, you think of the chapter that we read, and then you yourself notice that you learn something new, and every day you find something new for yourself. So anyways, so what we did yesterday was that we read about the law, how it works, and what should we focus on, what sentences we should speak in our daily language, क्या हमें बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस पे फोकस करना है, राइट? हमें ये नहीं बोलना है कि अ, मेरी बस ना मिस हो जाए, या मुझे ट्रैफिक ना मिले, या मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। तो हमें ये सब बातें नहीं बोलनी है, या फिर ये भी नहीं बोलनी है कि मेरा मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। कोई भी कंप्लेन किसी भी फॉर्म में जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो वो कंप्लेन होती है। और अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो वही बढ़ता है, जो भी हम बोलेंगे वही हो, जो भी हम बोलेंगे वैसा ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। um okay, I request everyone to please mute. Okay. Okay. So we stopped here yesterday. You will have heard. Can you hear this? sayings Yes, like yes, yes. Please Okay. zoom, if it's possible, Yes. zoom your screen. Because it's a video, Rajiv, so I can't No, zoom you the. can zoom on your Oh, end, okay, Rajiv. fine, fine. On your end. You can zoom it. Wait. You mean here? Samidha, it's okay. अभी हम अपने अपनी डिवाइस पे zoom कर सकते हैं Okay, इसको. yeah, because it's a video. So हाँ. it's not the book which I am sharing, so that's why I can't. Sorry. But we can. हम कर सकते हैं इसको, okay? Okay, okay, okay. Wait, I'll. Samidha, you are not audible, I suppose. Sorry, I'm speaking to my son. Just a second, okay? Okay, okay. like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of these sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, Just give me a second, okay? I'm so sorry. So what this is saying is, now they are explaining it with respect to the Newton's law, कि जैसे every action has an equal and opposite reaction. तो हम जो भी हमारी लाइफ में होता है, जो भी हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमने कहीं ना कहीं दी हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, यू रीप व्हाट यू सॉ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। उसका क्या मतलब है? बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं, मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग मेरे बारे में क्रिटिसाइज करते हैं।
तो ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, ये अब आप बिल्कुल जान लो कि जो भी चीज आपके पास आ रही है वो आपने कहीं ना कहीं पास्ट में दी है, तभी वो आपके पास आ रही है. दैट मीन्स वट एवर यू हैव गिवन, दैट इज ओनली यू आर रिसीविंग राइट नाउ. सो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप पहले ले और फिर दें. ये लॉ ही नहीं है. लॉ वही है कि एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. यानी अगर आप बॉल को वॉल पे फेंकोगे तो वॉल वापस आएगी. किस फोर्स से फेंक रहे हो, किस डायरेक्शन से फेंक रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है. ओके, आई गेट यू मोर. गो. आई गेट यू मोर. तो एवरी एक्शन, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. सो तो जो भी आप एक्शन करेंगे उसी का रिएक्शन आपको मिलेगा, राइट? तो अब हम ये बोलना छोड़ देंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने ही कहीं ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हो रहा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस फ्रॉम टुडे. ओके, सो नाउ लेट्स बी फॉरवर्ड. It says, every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more you sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. तो सीधी सी बात ये है कि हम क्या दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. अब बुक ये कह रही है कि हम क्या देंगे, हम देंगे ग्रैटिट्यूड. अगर हम किसी कंप्लेंट देते हैं तो हमारे पास वो कंप्लेंट घूम के आएगी. हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं तो भी हमारे पास घूम के आएगा. अगर हमने सपोज अपनी मेड को फायर कर दिया या फिर गुस्सा कर दिया कि तूने ऐसा काम क्यों किया और तू ऐसे क्यों करती है, या फिर तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, या फिर रोटी अच्छी नहीं है, या फिर कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम गए ऑफिस और हमें बॉस ने भी क्रिटिसाइज कर दिया कि तुमने ये ड्राइंग ठीक से नहीं बनाई, या फिर तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट सही से नहीं बनाया. तो ऐसा होता ही है. ओके, सो वट एवर वी आर गिविंग वी आर रिसीविंग इट बैक. हो सकता है वो यहाँ से आ रहा हो या वहां से आ रहा हो, पर आएगा जरूर. हो सकता है कि वो आपको ऐसा याद भी ना हो, क्योंकि कभी कभी ना हम अनकॉन्शियसली भी ऐसा कर देते हैं. हो सकता है कि हमने बचपन में कभी करा हो, या फिर हमने कभी पास्ट लाइफ में भी किया हो. ये भी हो सकता है कि हम पिछले जन्म में करके आए हैं और उसका हमें आज देना पड़ रहा है. मिलना वही है जो आपने दिया है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही लॉ है. whatever you give you receive. What goes around comes around. What reap you. तो आज से हमने ये डिसाइड करना है कि हम क्या सो कर रहे हैं, क्या बीज हम बो रहे हैं अपनी लाइफ में. तो वो ये कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड का बीज बो. जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ही अबंडेंस आप रिसीव करोगे. द मोर ग्रैटिट्यूड यू गिव, द मोर अबंडेंस यू विल. सो एवरी एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अभी इसने बोला था ना कि every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. तो हम जितना थैंक्स करते जाएंगे, जितना थैंक्स का हम बीज बोते जाएंगे, उतना हम अपने ट्री को और वाटर देते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में अबंडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हैं. यानी अपने सीड को हम इतना दे रहे हैं, देते जा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, हमें बिल्कुल स्टॉप कर देना है उन सेंटेंसेस को, उन चीजों को जो कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा लेके आए जो कि नेगेटिव है. यानी अगर हम नेगेटिव दे रहे हैं तो हम नेगेटिव रिसीव भी करेंगे, राइट? तो आज हमें पता चल गया एवरी एक्शन, यानी जो भी मैं कर रही हूँ उसी का मेरे को उसका रिजल्ट मिल रहा है, राइट? तो मैं क्या करूंगी अब? मैं थैंक्स दूंगी, जितना हो सकता है दूंगी. दिस मीन्स एवरी एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड सेट्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग. एंड द मोर सिंसियरली, द मोर डीपली you feel, the more abundance you will receive. यानी जितना दिल से करोगे, जितना डीपली करोगे, जितना आप अपने हार्ट से करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को रिसीव करते जाओगे. नाउ द द एक्शन लाइज विद यू. अब ये बोलना कि मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं या फिर मेरा
मेरे फैमिली में ऐसा लोग हैं, मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा बॉस मेरे को अच्छा नहीं बिहेव करता, वट एवर। तो आज से आपको ये समझ जाना है कि इट इज बिकॉज यू डिड समथिंग इन द पास्ट, दैट इज व्हाई इट्स हैपनिंग। ओके। The more you will receive. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced. From there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. तो अब ये क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग इट थ्रू एवरी रिलीजन, because this book is not a religion, this book is a common book which is emphasizing on the learnings of each and every religion। यानी हर religion में जो सिखाया गया है सालों से, thousands and thousands of years से, जो हमें जो सिखाया जा रहा है इन religions में, उन्हीं का जिस्ट हमें बुक बता रही है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ओके, एंड शी इज सेइंग दैट दे हैड ग्रेटिट्यूड एट देयर कोर। ओके, सो अब वो एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि कैसे कैसे हर रिलीजन में ये मेंशन्ड है। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। सो मोहम्मद मोहम्मद जी ने बोला, यानी मुस्लिम कम्युनिटी ने बोला कि जो भी आप जो भी आप अबंडेंस रिसीव कर रहे हो, जो भी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, उतना ही आप अबंडेंस रिसीव करोगे। बुद्धा ने बोला कि ग्रेटिट्यूड और जॉय is the only reason for everything, you know, in your life, you what you are born for is gratitude and joy। then आगे Rejoice in the way things are. The whole world will belong to you. तो लाउजू ने क्या बोला कि इफ यू रीजॉयस इन अ वे थिंग्स आर, मतलब जो भी आपके पास है उसके लिए अगर आप खुश हो, हैप्पी हो, इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ यू आर हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू, राइट। तो इन सब ने क्या बोला कि ग्रैटिट्यूड करना है, तभी आप अबंडेंस को रिसीव करोगे। सिमिलरली Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King क्या बोला कृष्णा ने, कृष्णा जी ने क्या बोला कि जो भी उनको मिलता है ही इज हैप्पी, ही एक्सेप्ट विद जॉय। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम आपकी रजा में राजी हैं, राइट। हम आपकी रजा में राजी हैं, यानी जो भी भगवान जी आपने मुझे आज तक दिया है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट जब हम सुपर पावर की रजा में राजी होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम अपनी रजा को भी उनके आगे रख सकते हैं। फिर एक लेवल पे तब हम पहुंचते हैं जब हम बोलते रहते हैं कि हाँ जी भगवान जी, मैं बहुत खुश हूँ, इस चीज से बहुत खुश हूँ, हम फैमिली से खुश हूँ, मनी से खुश हूँ, हेल्थ से खुश हूँ। तो क्या होता है, एक लेवल पे भगवान जी कहेंगे अच्छा बेटा तू बहुत खुश है, तेरे को क्या चाहिए तू बता, तेरी रजा क्या है, फिर वो आपको देने लगते हैं। तो कृष्णा ने क्या कहा, व्हाट ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट्स विद जॉय। तो हमें भी हर चीज जो हमारे पास है, दैट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, जो कि हमें हमेशा होनी चाहिए rather than complaining। David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. सो एक चीज और किंग डेविड ने बोला कि यू हैव टू यू हैव टू से थैंक्स फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवंस एंड अर्थ। हेवंस एंड अर्थ मतलब धरती और स्वर्ग के बीच में जितनी भी चीजें हैं, आपको उनका थैंक्स करना है, धरती और स्वर्ग। ओके, तो एक ना फीलिंग चार्ट होता है पावर बुक में, उसमें क्या होता है कि मिडिल लाइन होती है, दैट मीन्स अर्थ, और उसके ऊपर जितनी भी फीलिंग्स होती है लव की, ऊपर तक जाते 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 जितनी भी मैं आपको शेयर करूंगी फीलिंग चार्ट आज ग्रुप में, तो उसको और ऊपर की फीलिंग्स को मान लो आप कि हेवन है, स्वर्ग है। यानी जितना आप टॉप फीलिंग्स में रहोगे, उतना आप हेवन की तरफ जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे। और उसके नीचे क्या है, पताल। ये पताल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट, ये सिर्फ हेवन की बात कर रहा है।
तो पाताल में क्या होता है कि जब गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड हम पढ़ रहे हैं अभी, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब अगर आपको किस लाइफ में अपनी हेवन तक पहुंचना है, स्वर्ग तक यू वांट टू रीच इन योर लाइफ, what you need to do is you need to hold that thread of gratitude to go up towards that feeling of love, towards that heaven. बट नीचे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो और चले जाओगे आप नीचे अपने आप। नेगेटिविटी तो आपको खींच ही रही है ना, इट्स पुलिंग यू ऑलवेज। सो when we are not doing anything, you are not practicing, you're not conscious enough of your thoughts, हम अपने thoughts को लेके conscious नहीं है, हम consciously gratitude नहीं कर रहे, हम consciously thank you नहीं कर रहे, तो ultimately होता क्या है, negativity हमें खींचने की try करती है, right? तो क्या होगा, हम फट से नीचे वाली feelings में तो फट से पहुंच जाएंगे बिना कुछ किए, right? So I will send that feeling chart also. So this line explains that. So I wanted to explain this and I loved this explanation by someone. So I'm sharing that with you. And Jesus said thank you before he performed each miracle. So before performing the miracle, Jesus also said thank you. Yeah. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Cherokee to the Tahitians, Eskimo and Maori, the practice of gratitude at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. These are the words by Tecumseh, Shawnee Native American leader. तो क्या बोल रहे हैं ये, उठते ही हमारे पास दे हैव लॉट्स ऑफ रीजंस टू बी थैंकफुल, हम आज जिंदा हैं उसके लिए थैंकफुल, हमारे पास आज, हम मैं आज चल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। Give thanks for your food. Give thanks for the joy of living. If you can't find a reason to give thanks, then the fault is with you. तो अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन, द फॉल्ट लाइज विद इन योर सेल्फ। तो आज से हम एक नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे ऑफ गिविंग थैंक्स। आगे आगे चलते चलते हमें पता चलेगा कि हम किस किस चीज के लिए थैंक्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आज तो ये लॉजिकली आपको प्रूव कर रही है कि आपको थैंक्स करना क्यों है। ये जो पूरा इंट्रोडक्शन हम समझ रहे हैं वो इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमारा लॉजिकल माइंड जो है ना वो चुप हो जाए और बोले अच्छा हाँ आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई नो दैट इट वर्क्स। Otherwise, आपका logical mind will tell you, no, 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 what do you mean by this? Why are you doing gratitude? What does this all mean to you, you know? So these are the logic things which he's gonna clarify you so that your logical mind doesn't hamper the magic for coming into your lives. Okay? So अभी जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, डे 13 तक हम सिर्फ और सिर्फ नए नए तरीके सीखेंगे ग्रैटिट्यूड करने के। ओके? History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. तो यहाँ पे उन्होंने सारे डिस्क्राइब कर दिए कौन कौन लोगों ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया और अपनी लाइफ में अचीव किया कुछ ना कुछ। लाइक आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तो इस बुक में बहुत बार मेंशन होगा एंड ही यूज्ड टू से 100 times a day थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट माइंड्स। ओके, सो उसके बारे में हम आगे सीखेंगे, बट अभी पढ़ते Is हैं। it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder
that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science in humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. सो ये सब कॉमन है इन सब में, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, इन सब में एक बात कॉमन है कि वो उन सबके लिए ग्रेटफुल थे जो उनसे पहले रह चुके थे, यानी वो मैन एंड वुमेन जिनकी वजह से दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ abundance. Abundance means having everything that that you have in your life. सो अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास एक टैप है जिसमें पानी आता है, तो किसी ना किसी ने उसके ऊपर काम किया है, तभी वो पॉसिबल है. तो दीज पीपल, न्यूटन एंड आइंस्टाइन, डिड ऑल दैट to to say thank you to the people. Because of them they were living, right, a beautiful life. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in life, you have to practice it. तो ये लाइन सबको याद रखनी है कि ग्रेटिट्यूड की पावर बहुत सारे लोगों को नहीं पता. व्हाई? Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसका एक्सपीरियंस मैजिक कर ही नहीं सकते, right? So you need to practice it. Whatever the book says, we will follow that. And I'll move to the next video now because it's over here. So now My discovery. she is the next chapter. So she is telling about herself. The writer, Rhonda Byrne, is telling about how she got into this. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I would say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. तो ये बता रही है कि मैंने अगर किसी का गिफ्ट लिया और थैंक यू बोल दिया, या किसी ने मेरे लिए डोर खोला और मैंने थैंक यू बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ग्रेटफुल पर्सन थी. तो आप भी अपनी अपनी लाइफ में चेक करो कि क्या आप रियली में ग्रेटफुल हो, या फिर आप सिर्फ तभी थैंक यू बोलते हो जब आपके लिए कोई कुछ करता है, राइट? या फिर आप इन जनरल ग्रेटफुल हो. तो ये बता रही है कि वो नहीं थी, वो और ओकेजन पे बस थैंक यू बोल देती थी. एंड how her life was at that time. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. When I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. तो ये बता रही है कि जब वो ग्रेटिट्यूड फॉलो नहीं करती थी तो उनकी लाइफ में डेट भी था, वो स्ट्रेस में भी रहती थी, वो अपने रिलेशनशिप्स में भी सफर कर रही थी, वो अपने आप को कहती तो थी हेल्दी, लेकिन कभी कोल्ड हो जाता था, कभी कफ हो जाता था, कभी एग्जॉस्टेड फील करती थी. तो वो एक बिलो, आई वुड से बिलो एवरेज लाइफ जी रही थी बिफोर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. बिलो एवरेज मीन्स एक एवरेज पर्सन होता है जो खुश, नॉर्मली खुश रहता है, बट उसको कभी
तबीयत खराब हो रही है, कभी वो स्ट्रेस में है, कभी वो डेट में भी है, नॉट इवन न्यूट्रल पे भी नहीं है, डेट में है। तो क्या हुआ उसके साथ फिर? I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. ये कितने I लोगों के was साथ होता है हमारे, मतलब हम वेकेशन पे जा, मेरे को याद है जब जब बुक करने से पहले बिल्कुल सेम ऐसे ही होता था। वेकेशन पे गए, वीकेंड, संडे शाम को, मंडे क्यों है कल, मंडे क्यों है कल। मतलब मैं ये बोलूंगी कि बुक से पहले और बुक के बाद, इट्स इट्स जस्ट, आई वुड से, पलटना लाइफ, बिल्कुल 180 डिग्री स्वेप हो गई मेरी लाइफ तो। बाकी भी लोग बताएंगे जिन्होंने बुक, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी है अपनी लाइफ में, कैसे उनकी लाइफ स्मूथ होती जा रही है, कैसे उनकी लाइफ में सब कुछ अपने आप होता है, कैसे हेल्थ इंप्रूव हुई है, कैसे हम अपने परफेक्ट वेट पे आ गए, अपनी परफेक्ट जॉब में पहुंच गए। आई मीन many of us who have practiced this can share, and it really really works. not living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, or health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became more meaningful, much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. तो ये बता रही है कि जब उनकी लाइफ में ये सीक्रेट आया तो उन्होंने एवरी डे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने एवरी डे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, उसके बाद उनके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो गए, उनकी मनी मनी की प्रॉब्लम्स हट गई, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई, लाइफ मीनिंगफुल हो गई। राइट। तो और भी लोग जिन्होंने प्रैक्टिस करी है बुक, वो भी बता सकते हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है। और डेफिनेटली डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में, मनी की टर्म्स में, हेल्थ की टर्म्स में, मतलब ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इंक्रीज हो रहा है ड्रामेटिकली सब कुछ। और कैसे होता है हमें नहीं पता, बस हम तो शुक्राने में रहते हैं, यू नो ग्रेटिट्यूड में, वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। और हर रोज हमारे, और कुछ नहीं बोलूंगी तो एटलीस्ट हमें ये समझ आ गया है कि किस चीज पे फोकस करना है। यानी अगर हम कहीं वेकेशन पे गए तो रेदर देन टॉकिंग अबाउट व्हाट डिडंट गो वेल, हम क्या बात करते हैं, ये मैजिक हुआ, ये मैजिक हुआ, अरे ये हो गया उस दिन, पता है वो हो गया। तो जब हम सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करते जा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर ग्रेटफुल, इट मीन्स वी आर एक्नॉलेजिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। और यही यही करना ही है। बुक भी यही कह रही है, और आगे जाते जाते हम सीखेंगे कि देखो, वो भी अपनी लाइफ से एग्जाम्पल बता रही है आपको, तो आगे भी हमें अपनी लाइफ से देखना है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। राइट। More than anyone else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Bring the magic into your life. सो ये जो इसका स्टेंजा है, जो इसका टॉपिक है, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, का भी एक मीनिंग है कि यू हैव टू ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। इट्स नॉट रिटन मैजिक विल कम इनटू योर लाइफ,
So you have to bring the magic into your life. How? By practicing gratitude. If you don't practice gratitude, you will not bring it. So you have to do something so that it comes in your life. Okay? आपको करना पड़ेगा तभी वो No आएगा. जो हम देंगे वही पाएंगे, राइट? सब कुछ लिंक्ड है यहाँ पे. एक एक लाइन का बहुत डीप मीनिंग है. सब लोग बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं ये, राइट? matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. तो आप कहीं पे भी हो, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कनाडा में हो, आप यूके में हो, आप इंडिया में हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो या आपकी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं. जॉब नहीं है तो भी, जॉब है तो भी, जो भी सिचुएशन है, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. तो एक एक लाइन देखिए, वो अभी पहले बोल रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, अब बोल More रहे हैं मनी के बारे prosperous में. ये देखें, so that you turn your तो ये अभी उसने relationships क्या बोला? Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what they state. कुछ भी, whatever state they are in now, you can change it through gratitude. Prosperous भी बन जाएंगे, आपको money भी मिल जाएगा, make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. Okay? अभी उसने पहले relationships बोला, फिर money बोला, अब वो into joyful and meaningful relationships so health that के बारे you have the money you need to में do do the the things you want to do. It will increase your health health. and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. Okay? करियर को भी एक्सलरेट करता है. मैंने अपनी ड्रीम जॉब पाई है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से. मैंने अपना ड्रीम कंट्री पाया है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से. मैंने 10 ड्रीम्स लिखे थे 2021 में जब मैजिक बुक करी थी, और सारे के सारे 2022 में ऑलमोस्ट सब टिक 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 हो गए. कैसे? प्रैक्टिस. ग्रेटिट्यूड कैन गिव यू एनीथिंग दैट यू वांट इन योर सक्सेस, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स. तो मतलब बस करो, करके देखो, ट्राई करो एक बार, एटलीस्ट हिम्मत तो करो. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप आए, आपने टाइम निकाला अपने ड्रीम्स के लिए. इट्स कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल. ओके? In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. या सो व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा चीजें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, ऐसी क्या मैंने ऐसा किया. तो जब हम बेसिकली ये होता है ग्रेटिट्यूड मतलब एक रोशनी, एक लाइट जो आप अपनी लाइफ में ला रहे हो. नॉर्मली हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस रहते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हेल्थ इशू हो रहा है, या फिर मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है. कंप्लेन्स होती है हमारी लाइफ में, मेरे पास घर नहीं है अपना, ये वो, राइट?
लेकिन वो एक अंधेरे की सिचुएशन है। हमें क्या चाहिए? रोशनी। और रोशनी मतलब लाइट, जहाँ हमें जाना है। एंड हाउ यू विल गो टूवर्ड्स दैट लाइट इज थ्रू ग्रेटिट्यूड। सो व्हेन यू मेक योर सेल्फ अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखते जाएंगे, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो भगवान जी देख रहे हैं ना कि ये बच्चा तो बड़ा ग्रेटफुल है मेरा। तो हम सभी तो चाइल्ड ऑफ गॉड है ना, तो जब वो बोलेंगे कि अरे ये बच्चा तो मेरा बड़ा ही ग्रेटफुल है, तो जो ग्रेटफुल होगा, भगवान जी कहेंगे ना कि चलो इस ये तो बड़ा थैंक यू बोलता है मुझे, तो मैं इसको ना और देता हूँ ताकि मुझे और थैंक यू बोले। राइट? तो हम वो हमें रोशनी और दिखाते जाएंगे। हमारे ब्रेन्स, हमारा माइंड इतना शार्पन होता जाता है विद ग्रेटिट्यूड कि हम समझने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, या फिर मैं इस अंधेरे से रोशनी की तरफ चला जाऊं। तो बस कुछ नहीं करना अभी फिलहाल के लिए। हम ये सोचेंगे कि हमें बस थैंक यू बोलना है हर चीज के लिए जो हमें दिख रही है। अभी आगे आते आते हमें समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, बट पढ़ते हैं। Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Okay, so we'll stop here. We have just 2 minutes left. So I think it is we covered a little more part of introduction, but we are still left with some. So we'll complete it tomorrow. और कल तक हमारी इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगी, तो फिर हम परसों से आई होप हम चैप्टर पे आ पाएंगे। लेकिन अभी तक का जो भी हमने किया वो क्लियर है सबको? या? Yes. Yes. थैंक यू। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। तो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर अ मिनट। मेरे को पता है बहुत शॉर्ट सेशन होता है, आई वांट टू कि हम शेयर करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, बट वी विल कीप अ सेपरेट सेशन मे बी ऑन द वीकेंड टू, सो दैट वी कैन गेट शेयरिंग्स फ्रॉम एवरीवन हाउ दे आर डूइंग। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे ही हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। thank you, thank you, God, for everything that I have. थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी। थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी प्यारी आईज देने के लिए कि मैं इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरे हार्ट के लिए, जो मेरे लिए 24/7 काम करता है, मुझे जो लाइफ देता है हर रोज। थैंक यू भगवान जी फॉर माई फैमिली which is giving me love all the time. Thank you भगवान जी for everything that I have, for all the money I have been given throughout my life. जितना भी मनी मेरी लाइफ में आज तक आया उसका बहुत बहुत थैंक यू। Thank you to all the people who are joining this session, this making this possible. Thank you भगवान जी कि हम ये बुक आराम से पढ़ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर पा रहे हैं। Thank you Zoom, thank you Internet, thank you all the technology because of which this is possible. Thank you water, thank you air, thank you Mother Earth, thank you Sun for giving us everything so our life is possible. Thank you, thank you, thank you, thank you भगवान जी